Hello everyone. We have already discussed about the introduction of cell and cell types. Today our next topic is cell organelles. What does cell organelles mean? It means that what components are used by cell to perform its functions for the working of a cell. सेल क्या होती है? सेल के पास बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उसे वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं. हम उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल. सबसे पहले हमारी सेल ऑर्गेनेल आती है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इट मीन्स दैट द लेयर विच कवर्स द सेल. Okay, but when we talk about a cell, then we call it a plasma membrane because cell contains plasma and the membrane which covered it is known as plasma membrane. So here you can also write it as a cell membrane is also known as plasma membrane. Plasma membrane has many functions to perform as a main organelle of the cell. The characteristics of cell are presence of bilayers of lipids and proteins between these two layers, proteins, intrinsic protein and extrinsic proteins. What does it mean? It means that सेल मेम्ब्रेन की दो लेयर्स होती हैं जो लिपिड्स की बनी होती हैं, पर उनके बीच में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है. कितने तरीक़ों से? दो तरीक़ों से, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड्स के बीच में प्रेजेंट होती है और फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट इजीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वहीं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है वो जो हमारे लिपिड्स की लेयर्स होती है उनके साइड बाय साइड प्रेजेंट रहती हैं एंड दे आर ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द सेल. लिपिड्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स. हमारे लिपिड्स बहुत टाइप्स के होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल भी है एंड अदर लिपिड्स, लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो फॉस्फोग्लिसराइड्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं. सेल मेम्ब्रेन के मॉडल पर बहुत सारे थीसिस हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैज़ proposed, but the most accepted model is given by Singer and Nicholson and is known as fluid mosaic model. Why fluid mosaic model? Due to the fluidity of lipids. When lipids move, they show a fluid-like structure, and after seeing that, Singer and Nicholson named that model fluid mosaic model. It's just a brief of cell membrane. And next is cell wall. Main feature of cell wall is that cell wall is present in plants only. It provides shape and protection to the cell, and it is also helpful in cell interaction. How? हमारी सेल वॉल है जो उसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहता है जिसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल ट्रांसफ़र किया जा सकता है. प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लाज्मोडेस्माटा बहुत मेन रोल निभाता है जो किसके थ्रू होकर जाता है? सेल वॉल के थ्रू. नाउ मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मनास एंड मिनरल्स. ये किसके हैं? एल्गी के. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जो प्लांट्स का कंपोनेंट्स है वो होते हैं हमारे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड अदर विच आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स. पेक्टिन्स और प्रोटीन्स भी प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं. वहीं जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा हेयर. It is written that cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. सेल वॉल में एक मिडिल लेमेला होती है, वो किसका वर्क करती है? कैल्शियम पेक्टेट का. कैल्शियम पेक्टेट क्या है? जब हमारी सेल डिवाइड हो रही होती है तब दे नीड आयंस इन विच कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज endomembrane system. It consists 4 types of organelles and these are ER, Golgi complex, lysosomes, vacuoles and vacuoles. There are other type of organelles also, but we not consist them in endomembrane system, and these are mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not considered as part of what? Endomembrane system. This is
peroxisome. Okay, so let's study from the ER. ER means endoplasmic reticulum. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनसाइड इट इज ल्यूमिनल. इसके दो पार्ट होते हैं, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ल्यूमिनल इज इनसाइड पार्ट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल इज outer part. Okay, and it contains the cytoplasm, and these two structures are differentiated with the help of a compartments. Types of ER on the basis of presence of ribosomes. What is these ribosomes? I told you before that these ribosomes are non-bound organelles, and they are present on the surface of the endoplasmic reticulum. When it is absent, then it is known as smooth endoplasmic reticulum for synthesis of steroidal hormones. Okay, whereas RER, rough endoplasmic reticulum, is for protein synthesis and ribosomes are present on it. Next, Golgi apparatus. What is this Golgi apparatus is? Golgi apparatus is described by Camillo Golgi in 1898. Okay, they consist cisternals. In these structures they consist cisternals. Main work of Camillo Golgi apparatus is packaging of material which comes from the nucleus. जब हमारा न्यूक्लियस बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है तो उनको एक स्ट्रक्चर में प्रोटेक्ट करने के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो गोल्गी apparatus के थ्रू किया जाता है. जो गोल्गी apparatus है उसका स्ट्रक्चर सिस्टर्नल से बना है, जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है. जब वो स्टार्टिंग का होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस एंड दैट इज कन्वेक्स. और व्हेन वी टॉक अबाउट मैच्योर फेस देन इट इज कनकेव ट्रांस. नेक्स्ट होती है हमारी लाइसोसोम्स. दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स formed by packaging of Golgi apparatus, and they are rich in hydrolytic enzymes. They are capable of digesting all type of nutrients. What does it mean? It means when the waste materials of the cells goes in lysozymes, they break them in very small particles which can be reused by the cell. They consist all type of hydrolytic enzymes which are capable to break all type of nutrients. Okay, that's why they are also known as suicidal bag. If lysosome break down, then it can eat up its own cell. That's why also known as suicidal bag. Next is vacuole. What is this vacuole means? Mainly this vacuole present in plant cell, and its main function is to contain water set and excretory products which are not useful for the cell, and it contains in plants only. It contains an outer layer known as tonoplast. This question may arise in your exams when you try to do any other exam. So what is the outer layer of vacuole is? It is tonoplast. This organelle is useful for transportation of ions. When cell needs ions, then vacuoles plays a very important role, and it is useful in providing ions for the cell. So for today this is enough, that we have already learned all type of organs. Let us revise once. First cell organelle is cell membrane. It is outermost layer, and its main model accepted is fluid mosaic model. Next is cell wall. Cell wall is mainly present in plants, and its components are different types in algae and in plants. In algae it is cellulose, galactans, mannose and minerals, and in plants it is cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. Now next one is endomembrane system. Endomembrane system consists 4 types of organelles, and these are endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. They have different types of functions, and main functions of endoplasmic reticulum is to produce steroid hormones and proteins. These functions are depend on the type of ER.
it has two types, SER and RER. SER, smooth endoplasmic reticulum, which does not contain ribosomes, whereas RER, rough endoplasmic reticulum, contains ribosomes. Next one is Golgi complex. Golgi complex main work is to package the material which is produced by the nucleus and has to transfer from one cell to another cell. Next is lysosomes. Lysosomes are very useful for the function of the cell, because when the wastage materials come out from the cell, it is come in vacuoles, where in lysosomes, where it is break down into the nutrients which can be reused by the cell. And the last one is vacuole. Vacuoles are present in plants mainly, and their function is to contain the water sap, and they are very useful in providing ions for the cell. And the outer layer of the vacuole is known as tonoplast. Thank you everyone, and have a nice day.